Welcome everyone. Today I will be taking class 11th Kingdom Monera. Class 11th Kingdom Monera we have already started. We have done the various types of bacteria. Now today I will be taking the structure of bacterial cell. You can see here this is the structure of bacterial cell. Bacterial cell is prokaryotic, that is no true nucleus present. So nucleus is not bounded by nuclear membrane. You can see the structure, the bacteria, it is surrounded by a rigid and tough layer which is known as cell wall. Now this cell wall, it is made up of peptidoglycan. And this peptidoglycan, it consists of N-acetyl muramic acid, that is NAM, and second is N-acetyl glucosamine, NAG. So the cell wall, it consists of, it is made up of peptidoglycan, and this peptidoglycan, it consists of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine, that is NAG. Now the function of cell wall is it protects the cell from pressure. Okay, those cell wall, it protects the cell from internal pressure. Now next is capsule and slime layer. Next is capsule and slime layer. Now some bacteria, most of the bacteria, they secrete extracellular fluid. Extracellular fluid, here you can see here, this is the extracellular fluid on the cell wall, on the outer side of cell wall. Okay? And this is known as slime layer. Now slime layer can be removed. Slime layer, if you see the structure, slime layer, this is a bacterial cell, and this is the slime layer. This slime layer can be removed, but capsule cannot be removed. Capsule बहुत tightly bacterial cell के साथ attached रहता है, तो capsule को remove नहीं कर पाते हैं. This is capsule and this is slime layer. Slime layer, if you see, it can be removed easily, but capsule cannot be removed because capsule is tightly attached with the cell wall of a bacteria. Okay. Now this slime layer, it is composed of polysaccharides. Now, when this polysaccharides is attached to amino acid, it is capsule. That means capsule is, it consists of polysaccharides plus amino acids. So, when polysaccharides get attached with the amino acid, it forms what? Capsule. So, capsule layer, it cannot be removed. Now, these two, slime layer and the capsule, it protects the bacteria from environmental dangers like, for example, antibiotics. So, this capsule and slime layer is over. Now, next, come to cytoplasmic membrane or cell membrane, cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane, or you can say plasma membrane, anything, plasma membrane. Cytoplasmic membrane, just below this, you can see here, this is the just below, just cell wall, just inner side of the cell wall, you will find a thin membrane which is known as cell membrane, cytoplasmic membrane or plasma membrane. This cell membrane, it is composed of phospholipids and protein. It is composed of phospholipids and proteins.
So this cytoplasmic membrane or plasma membrane or cell membrane, these are composed of phospholipids and protein. Now this cell membrane, as we all know, it is selectively permeable. We have done in the chapter cell that cell membrane is selectively permeable. So, and this membrane, it surrounds the cytoplasm. You can see here, cytoplasm is the cell organelle, living cell organelle here in the cell, and it surrounds this cytoplasm. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है. तो पहले क्या हो गया, सेल वॉल, उसके बाहर क्या हो गया, कैप्सूल, जो कि प्रोटेक्ट करेगा. ये कैप्सूल है, दिस इज द कैप्सूल विच प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया, है ना, फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशंस, फ्रॉम द एनवायरमेंटल डेंजर्स, यू कैन से. एंड नाउ टू द आफ्टर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कम टू साइटोप्लाज्म. You can see here, cytoplasm. Cytoplasm is the colorless fluid. It is a colorless fluid present inside the cell. यहाँ पे अंदर की ओर present रहता है, and it contains all the cell organelles. सारे cell organelles cytoplasm के अंदर रहता है, ठीक है. लेकिन हमें पता है कि बैक्टीरिया does not contain. बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स रहेंगे. नाउ इट डिस्ट्रीब्यूट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ cytoplasm? It distributes oxygen, water and nutrients to other cell organelles. What does it contains? It contains proteins, lipids, nucleic acids. ये सब इसके अंदर होता है. Proteins, lipids, nucleic acids. And what is the function? It supplies or it distributes oxygen, water and nutrients to cell organelles. क्योंकि cell organelles को भी जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना. So कहाँ से कैरी करेगा? ये साइटोप्लाज्म देगा. So cytoplasm is the living part of a cell. ठीक है. Now next, after cytoplasm, next is mesosome. Next is mesosome. Now mesosome, as you can see in the diagram, mesosome is the extended part of cell membrane. You can see here, this is the extended part. This mesosome, it is the extended part. If you see the structure of mesosome, you will find extended part of what? Cell membrane. Now this is the part. This is the extended part of cell membrane. These are tubules. This is cell wall and this is cell membrane. Now you can see here, this is the extended part. ये क्या है? ये cell membrane है, ये cell wall है और ये capsule है. अब cell membrane यहाँ पे आके आप देखिए turn हो जाता है, ठीक है. तो ये क्या करता है? Increases the surface area, है ना. तो cell mesosome क्या कर रहा है? इसको बढ़ा रहा है cell membrane को, ठीक है. And cell membrane का extended part है, so it is the extended part of cell membrane. और what it does? It increases the surface area. जब surface area increase होगा तो cellular respiration भी ज्यादा होगा. जब surface area हमने पढ़ा है ना RBC में कि RBCs increases the how these are RBCs are present. What it does? It increases the surface area. क्योंकि RBC क्या करता है? Surface area एक के ऊपर एक pile up रहता है, तो इस तरीके से वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है. सेम हियर, इट एक्सटेंड्स. यू कैन सी हियर, इट एक्सटेंड्स. ये बढ़ा देगा सेल मेम्ब्रेन को और सरफेस एरिया को बढ़ाएगा. जब सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन विल बी मोर. नाउ व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस और रिएक्शन. It is a metabolic process or reaction that takes place in the cells of an organism. ठीक है. ये क्या ये है? ये एक रिएक्शन है. ये किसके? ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है. टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इज
which converts energy from nutrients and release ATP. ठीक है. So cellular respiration ताकि ज्यादा हो, इसलिए ये surface area को increase करता है, and it increases the surface area which help the cell to carry out cellular respiration. And what is cellular respiration? Cellular respiration is the process, or you can say it is a reaction in which it takes place in the cells of an organism, which converts energy from nutrients, है ना, and into ATP. Now, this is all about how mesosome helps in respiration. Mesosome also helps in the synthesis of cell wall. मेसोसोम किसका काम करता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ना, पावर हाउस ऑफ ए सेल बताया जाता है ना, क्योंकि इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सेम हियर चिल्ड्रन, it does the function same as mitochondria. ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में, उसी तरीके से इसका फंक्शन है. मेसोसोम बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करता है. सेलुलर रेस्पिरेशन मेसोसोम के अंदर होता है. तो मेसोसोम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड इट synthesize the cell wall. ठीक है. एंड here what happens actually, the electron transport acceptor is present here in mesosome. ठीक है. Electron transport acceptor is present in the mesosome and ATP is synthesized. So mesosome, it plays an important role. Now come to the next is nucleoid. Next is mesosome. Mesosome के बाद क्या हो गया? Nucleoid. Mesosome, then come to nucleoid. Nucleoid, here you can see why the name nucleoid is given, because nucleus is not bounded by nuclear membrane. Here the DNA is naked. DNA क्या है? Naked है. ठीक है. यहाँ पे कोई बाउंड नहीं रहता है न्यूक्लियोइड. इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल विच इज नोन एज जेनोफोर. The genetic material which is present, it is known as genophore. And this genophore, if you see the structure of genome, you will find this is the structure. These are rounded in structure. अगर जीनोम का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, these are rounded and double stranded DNA. ये क्या होता है? राउंडेड होता है और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. These are rounded and double stranded. And nucleus, that is nucleate, sorry, it is DNA is naked, it is irregular in shape, and the genetic material is known as genophore. The genome, you can see, it is a double stranded DNA. Now what is the function of this nucleoid? It helps in the replication and transcription of DNA, in which enzymes acts as a catalyst. बिना एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा न्यूक्लियोइड के अंदर. सो न्यूक्लियोइड, इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन. Transcription and replication. This is the structure of genome. Transcription and replication of DNA. And transcription and replication is not possible without enzyme. So enzyme acts as a catalyst. Clear? So enzyme acts as a catalyst for the transcription and replication of DNA. Now next is ribosomes. Next is ribosome. Ribosome, these are rounded granular structure, and these are present. 70 S ribosomes are present. What is S? S is Svedberg unit. Svedberg unit. So this ribosome, it is granular. You can see here the ribosomes. Here, these are the ribosomes. These are granular structure. Okay, rounded structure, granular, and it helps in protein synthesis. Ribosomes helps in protein synthesis. Next, come to pili. Next is pili.
It is present in gram-negative bacteria. You can see pili here. You can see pili. These are, see the structure. This is smaller than flagella. You can see the structure. These are shorter than flagella, but they are numerous. flagella कम होते हैं, ठीक है, और पीली क्या होता है, बहुत होते हैं. पीली नंबर ज्यादा होता है, लेकिन ये शॉर्ट होता है और ये नंबर में ज्यादा होता है. किससे? फ्लैजिला से. एंड पिली इट कंटेन्स प्रोटीन विच इज नोन एज पिलिन. दैट इज नोन एज पिलिन. नाउ दिस आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है और इसका फंक्शन क्या होता है? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होगा, जब हम करेंगे किंगडम मोनेरा में रिप्रोडक्शन, तो हम देखेंगे इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया. दिस पिली फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेल एंड फीमेल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज flagella. Flagella, as you can see, flagella क्या होगा? लंबा होगा, लॉन्ग. फ्लैजिला क्या होता है? लॉन्ग, लॉन्गर देन पिली. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया को मूव करने के काम आता है. एंड दिस फ्लैजिला इट कंसिस्ट ऑफ हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट. फ्लैजिला क्या होता है? कैसे अटैच रहता है? तो यहां पे हम देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर है. ये एक स्ट्रक्चर है. Now, if you see the structure, this part you can see this is cell wall and this is cell membrane, and this part is filament. This is filament. This is basal body. This is basal body and this is hook. The flagella, it is divided into three parts: basal body, hook and filament. और ये क्या हो गया? basal body. अगर आप इसका रफ डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम ऐसा है. This is the basal body, this is hook, this is hook, this is basal body and this is filament. If you see the structure is like this. This is the structure of flagella. You can see the flagella, it is of two parts: basal body, hook and filament. ठीक है. अब जो बेसल बॉडी है उससे हुक अटैच रहता है. तो हुक कहां पे अटैच है? आप देख रहे हैं यहां पे सेल मेम्ब्रेन. सो इट इज अटैच टू सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. फ्लैजिलम इज अटैच टू बेसल बॉडी, हुक इज अटैच टू सेल बॉडी एंड सेल मेम्ब्रेन. एंड फ्लैजिला, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट, इट इज नोन एज फ्लैजिलीन. ठीक है. सो फ्लैजिला का जो प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? फ्लैजिलीन. Flagellin. This is the protein present in the flagella. So flagella helps in the movement. Now last is plasmid. Sometimes bacterial cell contains what? Plasmid, which is the extra chromosomal factor present in some bacteria. So plasmid, it is present in some bacteria. It is the extra chromosomal factor. ठीक है. Plasmid is a small circular DNA. Circular DNA, इसका diagram is like this. If you see the diagram is like this. It is a circular DNA. ठीक है. And it can replicates independently. It replicates independently.
Now, this is all about the structure of bacterial cell. Once again, I am repeating, the bacterial cell, it is surrounded by a hard, tough, rigid layer which is known as cell wall. Cell wall is made up of peptidoglycan, and it helps the cell wall. What is the function of cell wall? Cell wall, it protects the cell from the internal pressure. Now, after cell wall, it comes capsule and slime layer. Slime layer you can see here, this part, the red colored part, this is the slime layer. Sometimes some bacteria, what they do, they secrete some extracellular fluid just outside the cell wall. And this outside the cell wall, that is known as slime layer. Slime layer, it consists polysaccharide. It is composed of polysaccharide. When along with the polysaccharide amino acid is attached, then it is formed capsule. Now slime layer क्या है? It can easily be removed. ठीक है, ये एक gelatinous layer है, इसलिए it can easily be removed. Capsule को remove करना मुश्किल है. Capsule hard होता है और ये बैक्टीरिया के चारों तरफ tightly attached रहता है, ताकि ये बैक्टीरिया को सेव करता है during unfavorable conditions from the environmental dangers. ठीक है, so capsule, it protects the bacteria. Next, cytoplasmic membrane, that is cell membrane. Just beneath the cell wall there is a membrane known as cell membrane. Cell membrane, again, it is selectively permeable and it is made up of phospholipid and proteins. Okay. Next, cytoplasm. Cytoplasm, you can see here, it is a transparent fluid and it consists of various cell organelles except membrane bounded cell organelles. Here other cell organelles are present like ribosomes, and it also, what it does, it provides water, oxygen, nutrients to the cell organelles. Now it contains lipids, proteins, nucleic acids and etc. Next is mesosome. Mesosome, as I said, it is the extended part of cell membrane. It increases the surface area. जितना सरफेस एरिया होगा सेलुलर रेस्पिरेशन उतना बढ़ेगा. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है यूकैरियोट्स के अंदर, वैसे यहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या काम करेगा? मेसोसोम. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. ठीक है, ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन होता जाए. और सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो प्रेजेंट रहता है मेसोसोम के अंदर. ठीक है, और एटीपी सिंथेसाइज होता है. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड जैसे मैंने बोला, इट इज naked DNA, and the genetic material, it is known as genophobe. Now next is ribosome. Ribosomes, again, it is a granular structure, rounded structure, and it helps in protein synthesis. Next is pili. Pili, you can see here, these are present all around the bacterial cell, and this pili, it is not present in all the bacteria. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में pili present रहता है. So pili, it is shorter than flagella and it is numerous in number. Pili, it contains protein known as pillin, and then come to flagella. Flagella, again, it helps in the movement of bacteria, and flagella, again, it is longer in structure and it is few. है ना? So next, flagella, it is again, it consists of three parts: basal body, hook and filament. Basal body, it is present in the cell wall, and this hook, it touches what? Cell membrane. Cell membrane से ये एकदम हुक की तरह, जैसे हुक से, जैसे हम लोग डेली यूज में हुक, डेली रूटीन में हुक यूज करते हैं, उसी तरीके से ये इसको खींच के रखता है. एंड दिस हुक कनेक्ट्स द बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट. ये हुक क्या करेगा? बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करके रखेगा. एंड लास्ट इज प्लाज्मिक, विच इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर. So this is all about the structure of bacterial cell. Next we will do the reproduction in bacteria. Thank you, children.